Good morning friends. Now today we will see exercise 3G. See your page number 43. Now you have to write down all these word problems in your notebook. So in your notebook write down exercise 3G, then write down solve the following word problems in your notebook. Write down this question. Then below that write down first question. 754 people are standing in a queue. Queue means what? Line. हम लोग कैसे लाइन से खड़े रहते हैं, हमारी हर एक क्लास की सेपरेट लाइन होती है, बॉयज की होती है, गर्ल्स की होती है, वैसे ही 754 people are standing in a queue. Queue means line. 754 people एक लाइन में खड़े हैं. If the number of females is 328, अभी उस लाइन में सपोज 328 फीमेल्स मीन्स लेडीज खड़े हैं. सो फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स. तो उस लाइन में कितने मेल्स खड़े हैं वो हमको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. सो बिगर नंबर दैट वी हैव टू राइट फर्स्ट एंड देन वी हैव टू राइट डाउन द स्मॉलर नंबर. सो यू फर्स्ट राइट डाउन 754. So as you know, you have to write down each number in each separate box. So write down 754 minus 328. Now do the subtraction. Okay. So 4 minus 8 not possible. So take 1 from this part and it will become now 14. 14 minus 8, 6. 5 minus 1, 4. 4 minus 2, 2. 7 minus 3, 4. So what is our answer? 426. Below this you have to write down this statement. You will write like this. So 426 males are there in a queue. So you have to write down this statement. Okay. So in this way you will write this first example. Okay. Now see question number 2. The cost of a table is ₹540. एक टेबल है, उसकी कॉस्ट है 540 rupees. If the cost of a water bottle is ₹355 less than that of the table. अभी देखो एक वाटर बॉटल है जिसकी प्राइस है 355 लेस देन दैट ऑफ द टेबल. टेबल की जितनी प्राइस है उससे 355 लेस वो वाटर बॉटल की ये कॉस्ट है. सो व्हाट इज वी हैव टू फाइंड आउट हियर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वन वाटर बॉटल. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट डाउन फर्स्ट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल दैट इज ₹540. सो फर्स्ट यू राइट डाउन 540. Then write down 355. Okay. So we have to do subtraction here. 0 minus 5 not possible. So take 1 from this 4 and you write down here 10. 10 minus 5. 5, 4 minus 1, 3, 3 minus 5, not possible. So take 1 from this part and write down here 13. 13 minus 5, 8, 5 minus 1, 4, 4 minus 3, 1. So what is our answer? 185. Now write down this statement. So cost
of the water bottle is ₹185. Okay, so everything you write down in your notebook. Now see third example. In a school there are 522 students. How many students are there in the school? 522 students. If the number of girls is 278, find the number of boys. अगर स्कूल में 278 गर्ल्स है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज. So what we have to find out? Number of boys. So what we have to do here? Subtraction. So you write down 522 minus 278. Now do this subtraction. Okay. Now see, 2 minus 8 not possible. So take 1 from this 2 and write down here 12. 12 minus 8, 4. 2 minus 1, 1. 1 minus 7, not possible. So take 1 from this 5 and you write down here 1. It will become 11. 11 minus 7, 4. 5 minus 1, 4. 4 minus 2, 2. So what is our answer? 244. So you write down here the statement. So the number of boys is 244. So this way you write down in your notebook. Now see fourth question. प्रकाश earns ₹506 per week. प्रकाश नाम का एक लड़का है, वो एक वीक में 506 रुपीज कमाता है. His weekly expenditure is ₹380. वीकली पूरे एक वीक का उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट? खर्चा. वो कितने पैसे खर्च करता है पूरे एक वीक में? वो पूरे एक वीक में 380 रुपीज खर्च कर देता है. सो फाइंड हिज वीकली सेविंग्स. अगर वो 380 रुपीज खर्च करता है तो उसके पास कितने पैसे सेव होते हैं, मतलब उसके पास कितने पैसे जमा रहते हैं, वो हमको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू? राइट डाउन 506 minus 380. Okay, so we have to do here subtraction. 6 minus 0, 6. 0 minus 8, not possible. So take 1 from this 5 and write down here 10. 10 minus 8, 2. 5 minus 1, 4. 4 minus 3, 1. So what is our answer? 126. So you write down. So his weekly savings is ₹126. Now see fifth example. There are 480 seats in a cinema hall. सिनेमा हॉल थिएटर हम बोलते हैं जहाँ पे हम पिक्चर बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सिनेमा हॉल. फॉर अ पर्टिकुलर शो 375 persons visited the hall. एक पर्टिकुलर शो था, उसके लिए 375 पर्सन, ये जो 375 लोग एक साथ ही उन्होंने टिकट खरीदा और ये सब लोग पिक्चर देखने के लिए आए, शो देखने के लिए आए. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स दैट रिमेन वैकेंट इन दैट शो. अभी 480 सीट्स वो सिनेमा हॉल में थे और 375 पर्सन्स वहां पर आकर बैठ गए.
तो कितने सीट्स बाकी रह गए, खाली रह गए, वैकेंट मीन्स खाली रह गए, तो वो हमें फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, 480 minus 375. So we have to do here subtraction. See, 0 minus part not possible. So take 1 from this 8 and you write down here 10. 10 minus 5, 5. 8 minus 1, 7. 7 minus 7, 0. 4 minus 3, 1. So what is our answer? 105. So we write down. So 105 seats remain vacant in that shoe. So you write down as it is. Now see sixth question. A farmer produced 815 kilogram wheat. Wheat means what? गेहूं. एक फार्मर, एक किसान के खेत में कितना प्रोडक्शन हुआ व्हीट का? 815 kilograms. 149 kilogram were damaged due to rain. अभी उसमें से 815 kg में से 149 kg were damaged. बारिश गिर गई, तो बारिश गिरने की वजह से क्या हुआ? 149 kilograms उसके खराब हो गए, डैमेज हो गए. एंड द रेस्ट ही सोल्ड. और जो अच्छे थे उसने वो बेच दिए. सोल्ड किया मतलब बेच दिया दुकानदार को. हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ व्हीट वेयर सोल्ड? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड. हमको क्या ढूंढना है अभी? कितने किलोग्राम वो फार्मर ने दुकानदार को जो व्हीट है वो बेचा. सोल्ड मीन्स बेचा. सो वी हैव टू डू हियर सब्ट्रैक्शन. सो राइट डाउन 850 minus 149. So do here subtraction. Remember, every time you write down as it is, each number in each separate box. 5 minus 9 not possible, so you take 1 from this 11 and you write down here 15. 15 minus 9, 6. 1. Always remember, whenever 1 is there and if 1 minus 3, 1 minus 4, whenever bigger number we have to subtract from this 1, you always remember 1 means 11. So 1 is already given here. So 11 minus 1 means how much? 10. 10 minus 4, 6. 8 minus 1, 7. 7 minus 1, 6. So what is our answer? 666. So you write down. So 666 kilograms of wheat were sold. So you write down as it is. Now see seventh question. There are 643 books in a public library. एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसमें 643 बुक्स है. 125 बुक्स वेयर इशूड टू द मेंबर्स. अभी जो लाइब्रेरी में लोग आते जाते रहते हैं तो पढ़ने के लिए बुक्स लेकर जाते हैं घर पे. तो 125 लोगों ने मतलब 125 बुक्स लोगों ने अपने अपने नाम पर, वो जो लाइब्रेरी रहता है वहाँ पर उन्होंने इशू कर दिया है. उनके नाम पर, नाम के आगे लिख दिया कि इन लोगों ने ये बुक्स अपने घर पर लेके गए पढ़ने के लिए. हाउ मेनी बुक्स रिमेन अनइशूड इन द लाइब्रेरी?
सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट कितने बुक्स है अभी लाइब्रेरी में जो अनइशूड है, मतलब ये किसी को भी किसी के नाम पर भी दिया नहीं है, वो अभी लाइब्रेरी में ही है. सो दैट नंबर वी हैव टू फाइंड आउट. सो वी विल डू हियर subtraction. So write down 643 minus 125. Now do the subtraction. Now see, 3 minus 5 not possible. So we have to take 1 from this 4 and write down here 13. 13 minus 5, 8. 4 minus 1, 3. 3 minus 2, 1. 6 minus 1, 5. So what is our answer? 518. So we write down below this. So 518 books remain unissued in the library. So write down as it is in your notebook. Now see 8th question. What must be added to 223 to get 665? So very simple it is. What must be added to 223? Added. So first we have to do the subtraction. Then we will get answer of this. So what we have to do here? 665 minus 223. So we have to do here subtraction. 5 minus 3, 2. 6 minus 2, 4. 6 minus 2, 4. Now see, 442. Suppose we want to check it that our answer is correct or wrong. So what we have to do? We have to do the addition of these both numbers. What is our answer and this smaller number? Okay, we will do that. 442 plus 223. Okay, 3 plus 2, 5. 4 plus 2, 6. 4 plus 2, 6. Now see, this answer and this number is same. That means our answer is correct. Okay, so what is our answer? 442. So what we will write here? So 442 is number we can add to 223. Okay, so we write down as it is in the book. Now see 9th question. How much is 589 greater than 408? So for that we have to do here subtraction. 589 minus 408. Do here subtraction. 9 minus 8, 1. 8 minus 0, 8. 5 minus 4, 1. 181 is our answer. Okay, so see now, what is the question? How much is 589 greater than 408? Suppose we do the addition of this 408 plus 181. 8 plus 1, 9. 8 plus 0, 8. 4 plus 1, 5. What is our this answer? 589. Here also 589. मतलब ये दोनों की एडिशन अगर हमने किया तो हमारा आंसर कितना आएगा? 589. That means our this answer is correct.
So you write down. So how much is 589 greater than 408? We can add 151 to 408. So what our answer will be 589. Now see 10th question. The sum of two numbers is 703. Sum means what? You first remember. S-U-M. Sum always meaning is addition. You should remember this word sum. Sum means addition. So addition of two numbers is 703. दो numbers की addition का आंसर कितना है? 703. If the greater of the two numbers is 552. अभी इसमें से अभी दो नंबर्स का हमने एडिशन किया, उसमें से जो ग्रेटर नंबर है वो नंबर है 552. फाइंड द स्मॉलर नंबर. दो नंबर की एडिशन की है, उसमें से एक नंबर जो है जो ग्रेटर है वो है 552. So what we have to find out? We have to find out the smaller number. For that we have to do the subtraction. So we have to do 703 minus 552. So do the subtraction. 3 minus 2, 1. 0 minus 5, not possible. Take 1 from 7. So we have to write here 10. 10 minus 5, 5. 7 minus 1, 6. 6 minus 5, 1. So what is our answer? 151. So you write down. So the smaller number is 151. Suppose we want to check that. See, 552 is the greater number plus 151. Now see, 2 plus 1, 3, 5 plus 5, 10, carry 1, 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 7. That means this our answer is correct. So write down everything as it is in your notebook. Now see 11th question. The difference of 453 and 980 is added to 372. Now see the difference. Difference means every time you remember meaning of difference is subtraction. Suppose one question is given. Find the difference of following numbers. Means what? You have to subtract. You have to do the subtraction here. Find the difference. Okay. So every time you remember the meaning of difference is subtraction. So what is it given in this example? The subtraction or the difference of 453 and 980. So for that we have to first subtract 980 minus 453 is added to 372. अभी जो भी हमको आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, जो भी नंबर हमको मिलेगा उसको फिर उसमें फिर 372 ऐड कर देंगे. Okay, so what number do we get as the sum? Okay, so we will see one by one, step by step we have to do. First, we have to do the subtraction of 980 minus 453. Now see, 0 minus 3, not possible. So take 1 from the 7 and you write down here 10.
10 minus 3, 7. 8 minus 1, 7. 7 minus 5, 2. 9 minus 4, 5. So what is the answer? 527. Okay, so what is in the question? Is added, means that this number is added to 372. So 527 plus which number is given? 372. You are to do, यहाँ पे हमको उसकी एडिशन करनी है. 7 plus 2, 9. 7 plus 2, 9. 5 plus 3, 8. So this is our answer. So what is the question now? What number do we get as the sum? So you write down. So we get 899 as the sum. Okay, so we both this as subtraction and addition. You write down everything as it is in your notebook. Now see 12th question. The sum of 350 and 473 is subtracted from 935. Now again, sum means what? Addition. The addition of 350 and 473, जो भी उसका आंसर आएगा उसे हमको क्या करना है? ई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 935. इन दोनों की एडिशन का जो भी आंसर आएगा उसको हमने ये 935 से सब्ट्रैक्ट करना है. What number do we get as the difference? Again see, difference means what? Subtraction. So remember, sum means addition, difference means subtraction. So we will do one by one. Step first, we have to do first addition of 350 plus 473. 5 plus 3, 8. 7 plus 1, 8. 4 plus 3, 7. So what is our answer? 788. Now what we have to do? जो भी अभी आंसर आएगा उसको हमको 935 से सब्ट्रैक्ट करना है. So you write down 935 minus 788. So that we have to subtract. Okay, so 5 minus 8. It is not possible. So take 1 from this 3 and write down here 15. 15 minus 8, 7. 3 minus 1, 2. 2 minus 8, not possible. So take 1 from this 9 and you write down 12. 12 minus 8, 4. 9 minus 1, 8. 8 minus 7. So what is our answer? 147. So below that you write down. So we get 147 number as the difference. Okay, so in this way total 12 examples are there, and that 12 examples you have to write down in your notebook.